We'll start the topic of electrostatics. Electrostatics होता है क्या? अगर हम बात करें it's a branch of physics which deals with the charges at rest. अब चार्ज रेस्ट पे नहीं होता है because charge microscopic particle है. Absolute rest of charge is not possible. Absolute rest is not possible. Because absolute rest is 0 Kelvin पे हो सकता है. We assume charge to be at rest if charge in any given part of the body remains constant if it's random motion. Charge is assumed to be at rest if its average velocity is 0. Average speed is not 0. Average velocity is 0. तो हम assume कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है उसकी एवरेज वेलोसिटी 0. So ऐसे केसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ब्रांच व्हिच डील्स विद चार्जेस इन मोशन. It's a branch of physics which deals with charges in motion. चार्ज के अंदर से बेंजामिन फ्रैंकलिन से शुरू किया परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट. तो उसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के चार्जेस थे. चार्जेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. These are just the name. Positive and negative do not have any mathematical significance. उसने नाम दिए कि दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, and these are the names given by Benjamin Franklin. Properties of charge जब हम पढ़ेंगे, we have to focus on two main properties: conservation and quantization of charge. Conservation of charge क्या है? Means the total charge in the universe is constant. Different ways में हम define कर देते हैं. Charge can either be created, not destroyed. It can be transferred from one body to another. अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं, तो चार्ज इन सिस्टम इज कांस्टेंट. अगर दो बॉडीज हैं A and B, initially both are neutral. दोनों पे कोई चार्ज नहीं है. If you rub these two bodies, कंजर्वेशन implies कि अगर एक पे चार्ज आएगा प्लस Q, दूसरे पे सेम नेगेटिव चार्ज आएगा ताकि टोटल चार्ज अभी भी 0 ही हो.
Basically, when you rub two bodies, we say electrons are transferred. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जो लूज करेगी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. Body which loses electrons. तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Body which gains electrons. इसमें सेम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. So एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा whenever charge transfer takes place. But conservation implies कि जितना एक पे पॉजिटिव होगा दूसरी बॉडी पे सेम नेगेटिव चार्ज आएगा. Second property which is important from both point of view is quantization of charge. Quantization of charge means charge is always integral multiple of certain minimum value. और क्वांटा. तो अगर मैं ले रहा हूँ Q is equal to n is integer and E is quanta of charge. इसकी वैल्यू होती है सेम इज चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड इज सेम इज दैट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो 1.6 into 10 raised to power 9. क्वांटाइजेशन इंप्लाइज कि चार्ज इसके मल्टीपल में हो सकता है. चार्ज कैन बी 1e 2e 3e -4e and so on, but it cannot be half-e, it cannot be 3/4e. So ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है. चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता. क्वांटाइजेशन इंप्लाइज कि इट्स ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल. बहुत सिंपल रीजन है कि चार्ज आता है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस. सो एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज -e, 2 किए तो -2e, 3 किए तो -3, बट चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस. सो क्वांटाइजेशन मींस कि चार्ज हमेशा ऐसी फॉर्म में रहेगा. क्वार्क्स एक इसमें एग्जेम्पशन होती है. क्वार्क्स पे हम लेते हैं कि अगर अप क्वार्क है इस पे चार्ज है +2/3 और अगर डाउन क्वार्क है तो चार्ज इज -1/3. सो ये फ्रैक्शन है चार्जेस में कि फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ ई है, बट ये कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. कि अगर प्रोटॉन है तो उसके अंदर 2 अप एक डाउन क्वार्क है, न्यूट्रॉन के अंदर एक 2 डाउन और एक अप है. इस पे टोटल चार्ज इतना इस पे ई है. तो ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप पे चार्ज क्वांटाइज होता है. So we say quarks don't break quantization. They always exist in groups. Charge on group is quantized. जैसे टोटल चार्ज ग्रुप पे क्वांटाइज आ रहा है. Then you have the invariance of charge, or sometimes we also refer to it as relativistic invariance. Relativistic means we are dealing with velocity comparable to light. क्या मतलब क्या है? नॉर्मली हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है. ये क्वांटिटी स्पीड के साथ वेरी करती है. चार्ज इज अ क्वांटिटी व्हिच विल नॉट वेरी विद स्पीड. कि मतलब अगर एक बॉडी पे चार्ज q है, वो रेस्ट पे है तो भी q है, वो मोशन में है तो भी q है, इवन इफ वेलोसिटी इज कंपैरेबल टू लाइट. सो वी से चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड. चार्ज ऑन अ बॉडी
does not vary with speed, even if speed is comparable to the speed of light. The crew at rest, they will have the same value. इसमें हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं वो स्पेसिफिक चार्ज. Specific charge is ratio of charge to mass. हमें पता है Q is constant. मास जो है वो स्पीड के साथ बढ़ता है. With speed. Because numerator constant और denominator बढ़ रहा है, तो we say that specific charge increases with increasing speed. Specific charge increases with increasing speed. The last property is the simplest, additive nature of charge. Basically means that charge is a scalar quantity. Total charge on a system is sum of charge on individual bodies. These are the main properties of charge on this chapter में use करने वाले. This is Coulomb's law. This law is for finding the force of interaction between 2 point charges. के अगर मेरे पास 2 point charges हैं, separated by distance r. Force of 2 charges. Proportional to the product of charges. Modulus लगाए हैं because हम force का सिर्फ अभी magnitude ले रहे हैं. Combining you can write constant of proportionality depends on this system of units selected whether you are using CGS or SA. Second, it depends on medium between the charges. SI of active में लिखें. Rate force as SI में लिखें पर मीडियम में लिखें. K is dielectric constant, it's also relative permittivity. So we can say that force in medium is force in vacuum upon epsilon naught.
Silent R is always greater than 1. That means force in medium is always less than force in vacuum. So medium में force हमेशा कम हो जाएगी. Properties की बात करें अगर conservative force है मतलब work done by electrostatic force does not depend on path forward. Closed loop में charge को move करोगे तो electrostatic force का work done 0 आएगा. Central force in nature है exchange particle photon है two body interaction है superposition principle obey करती है. Conservative nature है two body interaction. Can be attractive as well as repulsive. Change particle is photon. अब अगर partially filled medium होगा ये Q1 है ये Q2 है पूरे में डायरेक्ट्रिक नहीं है इस रीजन में जिसके थिकनेस T है टोटल डिस्टेंस R है इस केस में जो फोर्स हो जाएगी दैट इज इफेक्टिव डिस्टेंस जो हम लेंगे R minus Q रीजन में एयर है प्लस जो T डायरेक्ट फिगर है दैट इज इक्वल टू KT एयर you can say distance KT एयर force to remain same.